Hey guys, welcome to another video. In this video I'm going to draw Cristiano Ronaldo. मैंने पहले ही आउटलाइन ड्रॉ करके रखा है ताकि तुम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो. You can find the reference image on my Telegram channel, link in description. So first I draw hair. According to reference image, hairs के डायरेक्शन एक ही साइड है एंड उतना डिटेल्स नहीं है. सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बी ग्रेड यूज करके डायरेक्शन दे दूंगा, देन रिफ्लेक्शन को छोड़ के 8B ग्रेड यूज करके एक ही डायरेक्शन में हेयर्स को ड्रॉ करूंगा. और जो साइड के पोर्शन में हेयर्स है उसके लिए मैं पहले डार्क वैल्यू से अप्लाई करूंगा, देन आई यूज शार्प 8B पेंसिल्स टू ड्रॉ शॉर्ट हेयर्स. Then move on to ear. Ear के लिए I use 2B pencil and HB pencil. For this particular area मैंने पहले dark value से अप्लाई किया है and blend it. After that I use HB. Forehead के लिए मैंने layering technique का यूज़ किया है, means light grade to dark. First I observe the reference image very carefully. Then apply different grade pencils. Light areas में I use 4H grade and for dark areas I use 2B. सेम फॉर आईज, नोज एंड माउथ, बट आईज थोड़ा ज़्यादा डार्क है सो आई यूज 8B पेंसिल. सेम गोज फॉर नेक ऑल्सो, लेयरिंग टेक्निक. Next is t-shirt. Here I use HB and 4H. Gently मैंने शेड किया है, then blend. खास करके टी शर्ट पर मैंने ब्लेंडिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया है. So here's the end of this video. You guys know what I expect from you, so do it. And if you are a Messi fan or wanted to draw a Messi's portrait, then check out this video. So see you guys in next video. Bye bye.